Good afternoon, all. Then in the previous class, we are discussing about the regular expressions. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then can you tell me, or also I can say I can make you remember that we have gone for designing various regular expressions and how the regular expressions can be designed from a particular language. Then what was our last example? हमारा लास्ट एग्जाम्पल क्या था? So you are showing some of the language it can be converted to regular expressions. तो क्या था वो भी याद नहीं, कॉपी में कुछ नहीं लिखा. कॉपी में कुछ लिखे नहीं. भूल गए सब कुछ. Sigma is equal to 0 having even length of string. We are present here. Then from your side, if anyone want to ask any doubt, please ask questions. From your side, if anyone want to ask anything else. Because this is the time for you that you can ask questions. Anyone from your side, if you need that I need some questions or I have some questions, I need some answers, then you can ask from your side. Anyone? From your side? No one? सबको सब मालूम है? हेलो. कुछ तो बोलो, कुछ तो रिप्लाई करो. Yes. No, no doubts. Any अगर डाउट नहीं है तो मुझे भी कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि तुम लोगों का डाउट होगा, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ. Then I'm starting the discussion from my side then. These are some of the properties of regular expression. Okay. Atis, hello. Atis Raj. Are you listening? Atis Raj. अरे जो मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को सुनाई दे रहा है? Or is there some network issue? Yes, sir. Yes, He sir. replied in the chat box. Okay, So okay. he replied in the chat box. Yeah, I have seen. Then Atis, please answer. If I'll give you a question that over the alphabet set 0, 1, I want to write the regular expression for a language that starts and ends with different symbol. What will be the regular expression?
starts and ends with different symbol. What will be the regular expression? I'm asking you, Atis. Can you answer? डाउट किसी का नहीं है, मतलब सबको तो सब कुछ आएगा ना जो पूछूंगा. Starts and ends with different symbol. बताओ. और ये चीज मैं भी देख रहा हूँ, अगर क्वेश्चन पूछता हूँ तो उस बीच में दो चार भाग भी जाते हैं. ये भी होता है हर दिन. जनरल में होते हो, जब क्वेश्चन पूछोगे तभी दो तीन आउट. अच्छा चीज है. मेरे से भाग रहे हो मुझे लग रहा है. What I feel you are just running away from you, not from me. अतीश पूछ रहा हूँ. रिप्लाई. ओके, एक काम करूंगा, अभी से बोल रहा हूँ सबको. मैं मान रहा हूँ कि तुम लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. स्टिल यू रिप्लाई. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ रिप्लाइंग. माय पर्सनल व्हाट्सएप, your chat box, and the first choice is your voice. And if still you are not replying, then I will make you out. ठीक है, मेरी सिटिंग से तुम लोगों को निकाल देगा, क्योंकि मैं इतना देर नाम पर बुला बुला के वेट नहीं कर सकता. आई नीड द रिप्लाई. ओके, रिमेम्बर. सबको बोल रहा हूँ जो लोग हैं, अगर क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ नाम दिखाता है, वो लोग नहीं रहते. Then going for this, now I'll move for. देखो, तुम लोगों को डाउट पूछ रहा हूँ, तुम लोगों का डाउट नहीं है, मगर मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ 43 आर प्रेजेंट हियर, आउट ऑफ 43 आई थिंक ओनली 3 or 4 आर आंसरिंग, रिमेनिंग ऑल आर नॉट देयर. एक घंटे के बाद जैसे आतिश ने रिप्लाई किया, 10 मिनट के बाद, 5-10 मिनट के बाद की मुझे पता नहीं. तो उसी तरह से आई कैंट वेस्ट माई टाइम ऑन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग that if you will just behave like that, then I'll make you wrong. Okay. Then starting my discussion. Then the properties of regular expression are: the regular expression obeys various properties like associativity, distributive, commutative, and some special properties. Then going for those properties, I can say the regular expressions are associative as the property, that is R1 plus R2 plus R3 is same as. So your screen is not visible. Is it visible now? Yes, sir. Yes. Okay. Then R1 plus R2 plus R3 is same as R1 plus R2 plus R2. And R1 within bracket R2 R3 is same as R1 R2 R3. Then these two are associative. The first one, I can say the regular expression where R1, R2, R3 are the three regular expressions. The first one is showing you the associative property over union. And here the same associative property is defined over the operation concatenation. That means here I can say if I'll go for a union of R1 with the result of union of R2 and R3, it is same as
the union of result R1 and R2 with R3. And similarly, going for the concatenation R1 can be concatenated with the result of concatenation of R2 and R3, and it provides the same result as R1 and R2 concatenated. The result is again concatenated with R2. And hence we can say the regular expressions obeys the associative property. Similarly, we can go for the property of distributive, that is regular expressions are distributive in nature, and is the property of R1 plus R2, that is R1 union R2. When concatenated with R3 is same as R1 concatenated R3, the result is made union with R2 concatenated with R3. Similarly, R1 concatenated with R2 plus R3 is same as R1 R2 plus R1 R2. These are the cases of union, the associativity, distributive, commutative properties. And finally, going for some more properties here, you can see. And also, I am saying if needed, you can write by your own. अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब तुम्हें चाहिए, तो तुम लोग वहां से जो पीपीटी दिखा रहा हूँ इसमें से लिख सकते हो अपने आप. Then going for some more properties, I can say R1 union phi is same as R1, whereas R1 union epsilon is R1, and R1 star whole star is equal to R1 star. These are some more properties of regular expression. Within this, anyone want to ask anything else? Sir, Bolo. so what will be the regular expression for the question you asked just now? What is the question? So Which ending with different symbols. हाँ, तो तुम्हें तो इसका एक एग्जांपल देके दिखाया हूँ, देखो दिखाता हूँ. जस्ट कुछ ही पहले ये किसका था? यहाँ पे Same भी symbols. दिखाया. हाँ, यहाँ पे भी दिखाया था, यहाँ पे भी कहीं पे था वो सेम सिंबल वाला, कहीं पे दिखाया था, याद नहीं आ रहा. ये ऐसा है. हाँ, स्टार्स एंड एंड विथ सेम सिंबल. इसमें डिफरेंट होगा तो क्या होगा? अरे डिफरेंट सिंबल होगा तो क्या होगा? 0 sigma star 1 union 1 sigma star 0. या ये ए बी जो होगा उसमें ए बी तो नहीं होगा. अगर ए बी में पूछ रहा हूँ तो ए बी तो नहीं होगा, क्योंकि ए स्टार्ट विथ सेम सिंबल एंड विथ सेम सिंबल, ये तो Yes, डिफरेंट sir. नहीं है. इसे हटा दिया. इस बी को भी वैसे ही हटा दूंगा. यहाँ से अगर ए से शुरू हुआ, यहाँ पे बी पे एंड होगा, बी से शुरू हुआ तो ए पे एंड होगा. तो ज्योतिष ने जो बोला वही है आंसर. ए फॉलोड बाय एनीथिंग एल्स फॉलोड बाय बी, union B followed by anything else followed by A. That is A sigma star B plus B sigma star A. समझ पाया क्या बोला? A sigma star B union B sigma star A. अरे समझे क्या बोल रहा हूँ? रिप्लाई Yes, करो. sir. A sigma star B followed by B sigma star A. क्यों होगा पता चला ना? रिपीट करूं फिर से? हेलो, क्वेश्चन पूछ रहे तो आंसर भी सुन के रिप्लाई हाँ, sir. करो. समझ पाए कि और बताऊं? ए से तो शुरू और होगा. अगर मैं क्वेश्चन क्या था, 0 1 से पूछा था, 0 से शुरू होगा तो 1 में खत्म होगा. 1 पे एंड 1 होगा. में खत्म. तो 0 से शुरू होगा तो 1 पे खत्म होगा. बीच में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं. एनीथिंग. एनीथिंग. दैट मीन्स
start with 0, end with 1. That is 0, 1. And within the middle, you put sigma star. Or I can say write 0 plus 1 star. That is 0 within bracket. 0 plus 1 star. That indicates sigma star. क्योंकि सिग्मा यहाँ पे मैंने 0, 1 दे दिया है. 0, hello, Yes, sir. Yes, sir. 0, then you will go for 0 plus 1 star. That means anything. Sigma star is same as 0 plus 1 star. Okay, sigma is given here to be 0 plus 1. Then it is ending with 1 as it is started with 0. ये हो सकता है या फिर और क्या हो सकता है? 1 से स्टार्ट हुआ तो 0 पे एंड होगा. 0 पे 1 खत्म. sigma star 0. Then 1 sigma star 0, but here I can't write sigma because the alphabet set I know. That's why I'll write 0 plus 1 star. That will be the answer. Okay. Got it? Yes, sir. Then moving next I can say, और सेम सिंबल में भी देखो मैं वही किया था कहीं पे यहाँ 0 सिग्मा स्टार 0 लिखा था. 0 सिग्मा स्टार 0 इसलिए था कि 0 से शुरू 0 से खत्म. अगर अलग सिंबल होगा तो क्या होगा? 0 सिग्मा स्टार 1, 1 सिग्मा स्टार 0. इसका उल्टा जो है वही. Got it? Yes, sir. Then moving next, I'll go for a theorem. Basically here the theorem is based upon the concept I am saying. I am going for a new concept related to it known as regular expressions and regular languages. The heading is regular expressions and regular languages. And under that what I will study the equivalence of regular expression and finite automaton. The equivalence of regular expression and finite automaton. The heading is the equivalence of regular expression and finite automaton. Then what the theorem is saying? A language L is regular. It is saying a language L is regular if and only if there is a regular expression R such that L is equal to LR. And it basically means every regular expression has a corresponding DFA and vice versa. And the lemma used to prove this is if a language is described by a regular expression, then it is regular. Then using this lemma, actually how I will prove it, I'll use the definition of regular expression and then I will go for finding the NFA for the regular expression. Then I can show that for every regular expression, instead of this DFA, you can write finite automata. Not DFA, not needed, you can write FA. That means I am saying for every regular expression, there is a finite automata. In language, I can write the same as if the language is
described by a regular expression, then the language is irregular and can be represented by using FS. If the language is described by a regular expression, then the language is regular and can be represented using finite state machine. Then going for this theorem, I have to prove this. Basically, we will prove this using the method of by using the method of construction. I think you have remembered we have gone for the basic blocks of constructing regular expression, and these are the basic regular expressions. Have you remembered? This is the basic of regular expression that we have studied before. अरे याद है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then this was the basic regular expression that we have studied. And now I am saying that for this I will basically construct the finite automatons by the proof of. ये theorem समझ में आया? अगर कोई भी regular expression है तो उसका finite automata भी हो सकता है. Clear? Clear, sir. Then based upon that I am proving it. That means I will go for regular expressions and construct the finite automatas. And if I can construct the finite automata, that means I have proved it. For any regular expression, if I can construct the finite automata, then what I can say? That for every regular expression, there is a finite automaton. Automata. Then I am proving this. Then the first regular expression I am considering, that is R is equal to 5. Then what is the language accepted here? What is the language accepted by this finite automaton? Empty set. Empty set. How you know that? As the bracket does not contain anything. वहां पे मैंने गलत से टाइप कर दिया है, सोच लो. अभी मुझे ये, मैं यहाँ से कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, ये डायग्राम के बारे में पूछ रहा हूँ. मुझे just tell me what is the language accepted by this diagram. And as I have written, it is empty bracket. How you can justify this? How you can say that it is not accepting anything else? Epsilon. Epsilon, that means it is accepting something you are saying. It is accepting epsilon. Epsilon. Yes, So sir. there is no final state. Just wait. Jyotish is saying that it is accepting epsilon. No, Is it sir. No, true or- sir. Jyotish is not saying. Sikhar Swarup is saying. Yeah, I am saying the same thing. Jyotish Sikhar is saying it is accepting epsilon. Is it true? No, sir. No, sir. No, sir. Then why not accepting? So it's It is not the not final final state. state. Yeah, that is the case. Here it is not a final state. It is not a final state. And as it is not a final state, how it can accept something? That means here it is accepting nothing. And accepting nothing means if I'll go for acceptance, it is accepting phi. It is accepting phi. As phi means a null set. It is accepting nothing, the set is empty. And that's why this is the finite automaton for the language phi. Understood? It is not accepting anything else. Okay, now again I am asking,
Rajesh, tell me, if I'll give a self loop here with an input FB, then what will be the language again? Rajesh, are you listening? Rajesh Padi. Hello. Am I audible? Sir, Rajesh bolo. If I'll give a self loop within this figure, in the same figure I'll give a self loop and I'll give the input FB. Then what language the automaton will accept? Okay, Ananya, want to say something? Tell the answer. Don't worry, it may be right or may be wrong. But answer, don't waste time. Thinking a lot. Yes, sir. I don't need any yes sir, no sir. If you are listening the question, answer from your side. Don't waste time and answer quickly. It may be right, may be wrong because we are discussing. Anyone from your side? If I'll give a self loop here without, if I will give a self loop here with an input of A and B, then what it will accept? Sir, Nothing, AV. sir, nothing it will accept. Still, sir, 5. Still it is 5. Because I want to know your understanding or not. That's why I'm asking. Because if this is not a final state, whatever input I can give, I can go for any transition. There is no meaning at all. Because this is not final state. If there is no final state, how it can accept A, how it can accept B, or how it can accept anything else? Because for acceptance, I need a final state. If a state is not final, then it is a non-final state and it accepts nothing. And as this is a non-final state, whatever input you can give, it will accept nothing. The language is still remains fine. Okay, then moving next. This is another automaton I have shown you. For this, I think I have told you before, if an initial state becomes final, then it accepts epsilon. Yes, sir. If a initial state is also final, it accepts epsilon. And here no more input is there, only initial is final, and hence the language accepted by this is epsilon. Clear? Everyone understood why it is the for language epsilon? Then, moving next. This is a design that accepts language A, because I have given a input here, given a it is here, that's why it is accepting a language A. I think also you may not have any doubt. Any doubt? This is an automaton that accepts the string A. Any doubt? No, sir. No, no. Similarly, I can go for more operations like union, concatenation, and star. And I am showing you how that can be found out. You can see here. And these things, if you are getting doubt, I want to say, it's already I have explained you. Where I have explained? I have explained in the
Beginning of the class. Earlier in The beginning of the class. Regular operations, याद करो. earlier in last chapter, sir. That is the regular operations on NFA. अगर याद नहीं आ रहा है इसे बना दो, मैं दिखा दूंगा ये कहाँ पे बताया था. मैं अभी दिखा दूं उसके बाद बनाओगे. नहीं पहले बना दो. ये जो है इसका बना दो. दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर इप्सिलॉन जो अभी दिखाया. दिस इज फॉर फाई. यहाँ पे एक एरो छूट गया है फाई के केस में. ये चलेगा, सब कुछ सही है. दिस इज फॉर फाई. This is for A union B. This is for A dot B. And finally, the last one is for A star. Be quick. हो गया. अरे हो गया. The first one is for, I have shown you the first one already designed for A. Second one is for epsilon already designed. Next one for pi already designed. Only you have to go for A union B, A dot B and A star. Have you designed? Then going for next. Jyotish. Yes, sir. डिजाइन हो गया है. अरे रिप्लाई Yes, क्वेश्चन sir. इतना पूछ रहा हूँ थोड़ा तो. Yes, sir. Then moving next, I can say that as I told, you can design for R is equal to R1 plus R2, R is equal to R1 R2, R is equal to R star. If you are not remembering that where you have gone for this, then I can show you the figure where you have already gone for this. You can check. Are you remembering? This was the case we have gone for. When N1 and N2 are two automatons, then the first line showing you about union, the second one is showing you about concatenation, and the third one is showing you about star operation. याद है ना? अरे याद है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. This was already I have discussed, and hence based upon that we are moving next to discuss all these things. And based upon that we will go for some problems. And before that, in your chat box there is a link with you. Just go for attending the exam, and within the same time I am taking your attendance. Okay, sir. And one more thing I want to say you, listen.
those who are not present here Sir. during attendance, they can. That is not accepting. Link is not accepting it. I know it is not accepting. मैं दिया बोल रहा हूँ कुछ सुनने के बाद ही वो एक्सेप्ट करेगा. मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं सुनोगे. मैं बोल रहा हूँ अभी वेट करो, वो सुन नहीं रहे हो. सीधा रिप्लाई बोलिए दे. सर, बोलिए। जो लोग यहाँ पे नहीं रह के अटेंडेंस सबमिट कर रहे हो, सॉरी एग्जाम सबमिट कर रहे हो, मैं उनका हर दिन बैठ के मुझे डिलीट करना पड़ रहा है. और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, एक दो नहीं. और बेसिकली उन लोगों को बोल रहा हूँ डोंट डू इट. तुम लोग इतना देर से दे रहे हो और मैं उसे डिलीट कर रहा हूँ बैठ के, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ. यहाँ पे बोल रहा हूँ अभी एक तुम्हारा एक नाम बोल रहा हूँ, कृष्ण मुरारी ने ज्वाइन किया इनिशियली, बट नाउ ही इज नॉट हियर. पर जब रेस्पॉन्स आएगा उसका हर दिन का एग्जाम आता है, मैं यहाँ पे उसका हर दिन एब्सेंट डालता हूँ, तो जिसका एब्सेंट यहाँ पे है वहां पे मैं डिलीट कर देता हूँ. तो इसीलिए बोल रहा हूँ ऐसा करके फायदा क्या होगा तुम लोगों को. एंड हेंस आई एम सेइंग डोंट डू दैट. अगर यहाँ पे अटेंडेंस दे रहे हो तो वहां पे दो, वरना मत दो. ठीक है. ना गो फॉर द एग्जाम. अभिजीत, Present, sir. अंकित, अटेंडेंस के बाद भाग मत जाना. अंकित, साइमन, पार्थ, Present, sir. Sir, Ankit present, sir. तान्या, Present, sir. आशुतोष, Yes, sir. निखिल, राहुल, Yes, sir. Present. आयुष्मान, आयुष्मान, अंकित दास प्रेजेंट है. दे चुका हूँ, सुन लिया. एक बार बोलोगे सुन लूंगा. Thank you, sir. चंद्रकांत, आतिश, ज्योतिष, Present, sir. प्रत्युष, Present, sir. अनूप, हरिओम, Yes, sir. पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, संदीप, विक्रम, Sir, Sandeep Mishra present, sir. विक्रम. Present, sir. हाँ मैं दिया हूँ. स्मृति, स्मृति, राजीव, Present, sir. सिकृति, Present, sir. संबित साहू, संबित साहू, कृष्ण मुरारी, रेहान, Present.
Rahul, Divya Prakash, Present, sir. Apon, Apon, Present, sir. Present, आशुतोष, sir. दिया दिया एक बार बोलो काफी है. आशुतोष प्रेजेंट. Present, sir. जगज्योति, शिखर, सौम्य महापात्र, Present, sir. शीर्षक, Present, sir. अनन्या, Present, sir. Yes, sir. भुवनेश्वर प्रेजेंट सर. एक्सर एक्सर हो गया. राहुल, राहुल मल्लाकर absent. ज्योति नम्र, Present, sir. खुशी, Present, sir. शिबलू, निहार रंजन पले, Present, sir. निकिता, Present, sir. कृष्णा, Present, sir. अभी, Present, sir. अंजलि, Present, sir. दिव्या व्रत, Present, sir. दिव्य दर्शन, Present, sir. अलीसा, अलीसा, आदित्य, दीक्षा, Present, sir. अमृत, Present, sir. राजेश. Sir, present. हाँ अमृत प्रेजेंट हो. सत्य, हाँ प्रेजेंट है. सत्यनारायण, प्रज्वल, प्रज्वल, रूपम, Yes, sir. 37 हो. बाकी तीन किधर तीन चार भाग गए कहीं. चार नाम होना चाहिए. Sir, Smriti Ranjan Vishal present, sir. रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के छोड़ देना. Sir, 2276. मैं देख लूंगा अभी. Sir, chat box में लिख दिया. हाँ उसी चैट बॉक्स में दे देना. मैं बाद में देखूंगा. अभी फिर से शुरू कर रहा हूँ. Now go for the presentation. And I have already shared a figure with you that we have already discussed, and now moving for some questions. Then moving for the question, I can say the screen is in front of you where there is a question given to you. That there is a regular expression a B union A whole star for which you have to find out the NFA. The question is saying convert the regular expression a B union A star to an NFA in number of stages. And listen, this type of questions will be asked in the exam, and the steps matter, because if you are making something wrong but the steps are correct, then you will get marks. And that's why I'm showing you the steps that how you can go for constructing the NFA from regular expressions. Okay, then going for the steps, the question you are getting, this is the question or not? Are you getting the question? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Visible, sir.
then if it is visible, then you can see the question for which we have to design a NFA epsilon. Then going for the NFA epsilon, I'm showing you the steps by which you can design the automaton, and the steps are: what is the regular expression? What is the regular expression? A AB union union A whole star. AB union A whole star. Then the first step is design the automaton for A and design the automaton for B. The step number 1 is design the automaton for A and design the automaton for B. Okay. In the step 1, what you are doing? You have designed the automaton for A, and in the step 2, you have designed the automaton for. Is there any doubt? Is there any doubt? No, sir. To know how to design the automaton for A and B. Then going for the second case, this is a type where we have done. Otherwise, how you can go for a B? What is the other method? Just before I have shown you. इससे पहले वाले स्लाइड में दिखाया था. तो AB का और क्या मेथड है? अरे what was the method? A self loop. सेल्फ लूप. बोलो क्या जो बोल रहा हूँ नहीं सुन रहे हो, जो बता रहे हूँ वो, मैं जो दिखा रहा हूँ नहीं देख रहे हो, जो बता रहा हूँ वो सुन नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? Concatenation. कॉन्कैटिनेशन कैसे होता है? ये तो एक करके दिखाऊं, दूसरा कैसा है? मतलब सिर्फ वर्चुअली प्रेजेंट हो. ऐसा हुआ तो मेरा भी, मैं बाईपास करके जो चाहूंगा बोल के इधर उधर चला जाऊंगा. ए का इनिशियल बी का फाइनल ऐसा करके. ये तो वो मैंने दिखाया था, ये दो है. जस्ट पहले ये वाला फिगर दिखाया था कि नहीं दिखाया था? If there are two automaton, then join in between with a epsilon. This is first method. इसका इनिशियल इसका फाइनल दोनों को मिला दो तो ये सेकंड मेथड. दिखाई दे रहा है ये फिगर जो शेयर किया हूँ? Yes, sir. तो दिखाई दे रहा है तो फिर देख रहे हो या याद नहीं रख रहे हो, अगर या फिर देख ही नहीं रहे हो, दोनों में से कोई एक है. इसी फिगर के बेस्ट पे मैं वो वाला भी तुम्हें बस समझा रहा था. Instead of N1 and N2, two automaton, what I have done, I have merged the, let this is N1, this is N2. तो क्या हुआ? इसका फाइनल इसका इनिशियल यहाँ पे मिल गया. That means I have started from this place, I have reached here. The next one, पिन दिखाई दे रहा है ना? I have Yes, sir. Yes, started sir. from this place. यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे पहुंच गया, और उसके बाद क्या किया? इससे लाके इसके साथ मर्ज करवा दिया. Brought this into this position. खींच के लाके मिला दिया. मतलब this final and this initial are merged in this step, and now it is a B. Otherwise और कैसे कर सकते हैं? अरे otherwise और कैसे कर सकते हैं? अरे और कैसे कर सकते हैं? फाइनल को इसके इनिशियल से कर. सर और एक एप्सिलॉन हम दे सकते हैं. Final से initial. If I'll go for a epsilon here, हाँ कि नहीं? I'll join these two with a epsilon, then it will become the result. मतलब ये जो है ये भी वही है. दोनों में कुछ फर्क है? No, sir. I can write it also. This is step 1 and either this one or this one. You can follow anyone. Join both with a epsilon or go for this.
Clear? Now you got these two. Now you got these two. This is step number 2. First I have created A, then B, then I have joined them. What I got? What I got? I got, यहाँ पे मुझे क्या मिला स्टेप 2 में? String accept AB. AB. स्टेप 2 में मुझे क्या मिला? AB मिला मुझे. स्टेप 3 में मुझे क्या मिला? A यूनियन AB भी बोल सकते हो और AB यूनियन A भी बोल सकते हो, क्योंकि यू नो इट इज द प्रॉपर्टीज commutative, not associative. AB plus A कैसे होगा? This is AB, this is A. Create a new initial state. Join both by epsilon. Join both by epsilon. Understood? जैसे वहां पे किया था ये वही कर रहा हूँ. Yes, sir. Then going for next step. This is a B union A. Yes or no? Now this is a B union A whole star. Created a new state which I made final, then joined with this one with a epsilon, then final to initial, again epsilon. Okay. Any doubt? Any doubt? I have closed the responses. अभी कोई सबमिट नहीं कर सकता. Got the question? Got the answer? किसी का कोई डाउट है? जल्दी बोलो. Got it, sir. Got it, sir. Got it. Then I am moving for another example, and this is the final case for today. See, this is a, देखो दोनों के दोनों सही हैं, समझ पाए? दोनों के दोनों सही हैं, मगर डिफरेंस ये है कि the first one is based upon one method, the second one is based upon other method. तुम्हें दो मेथड बताया था, हाँ कि नहीं? हर किसी का यूनियन, इंटरसेक्शन, क्लोजर सबका दो दो वे था, हाँ कि नहीं? And here I have used different ways to design it for A plus B star. Is it visible? Do you understand the figure? Yes, sir. Yes, sir. इतना ऐसा बोलो, जो दो बेसिकली ज्योतिष और एक है आशुतोष, तुम दोनों में से बोलो इस फिगर में गलत क्या है? Sir, final. अगर इतना ज्यादा यस सर बोल रहे हो तो इस फिगर का गलत क्या है बोलो? सर अगर ये जो सेकंड जो है सर ये गए एप्सिलॉन पे, सर ये जो सेकंड स्टेट है, सेकंड लास्ट स्टेट, सेकंड लास्ट स्टेट मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता वो जो जा रहा है सेकंड स्टेट में. वो तो सही है. सर उसको यूज नहीं है सर उसका. यूज नहीं है कैसे? वो फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट है. स्टार ऑपरेशन में क्या होता है? फाइनल से इनिशियल जाता है कि नहीं जाता है? वही फाइनल है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो ए बी था यहाँ पे दो फाइनल था, तुम मिला Yes, sir. के यहाँ यहाँ पे पे एक फाइनल नहीं है. हाँ, तो वहां से वहां आया. मैं बोला ना दो मेथड बताया था, तो गलत क्या है? वो वाला फाइनल्स. पता नहीं चल रहा है, दिखाता हूँ वो भी.
ये वाला फिगर ऊपर एक छोटा सा मेथड वाला फिगर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। स्टार के लिए मैं 2 बताया था, ये 2, हाँ कि नहीं? आज ही दिखाया हूँ। अरे आज नहीं बना है, बनाने के लिए नहीं बोला था। ए बी का क्या होगा, ए स्टार का क्या होगा, दिखाई दे रहा है ना? आज ये Yes, बताया था। तुम्हें लिखने के लिए भी बोला था, अगर लिखे हो तो देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्टार। ए स्टार का सही है, देखो यहाँ पे एक बार। अरे इतना क्या सोच रहे हो, ये वाला आरो इनिशियल से फाइनल जाना चाहिए टू इंडिकेट एप्सिलॉन, मगर यहाँ पे उल्टा आ गया है, देखो। ठीक है, yes, sir. दिखाई दे रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? Here I have to go from initial to final. Is it visible? Mouse cursor. Visible, sir. Initial to final. मगर यहाँ पे क्या हो रहा है? Final to initial. It should be initial to final 1 arrow. ये डायरेक्शन सिर्फ बदल दो, बाकी सब ठीक है। मैं बोला देख के पकड़ पाते हो कि नहीं, पकड़ भी नहीं पाए। ठीक है, जाओ यहीं से कल शुरू करेंगे। अब गुड नाइट के। Thank you, sir. थैंक यू।